Morning class and happy Makar Sankranti, Pongal, Bihu and all the festivals. Okay, so if you have any queries then please put up. वो ये ला दीजिए कमेंट वाला ना, वो स्लाइड करके आता है ना. यही है शायद. Okay, Sahil, I will respond to that question. Morning, everyone. So the question that Sahil has put up, ये वाला बड़ा नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर इम्पोज कर दीजिए. हाँ, पूरा पेज डाल दीजिए. दूसरे बैच की. अच्छा. Okay. What is the strategy we should follow in growth stage? Okay. See, Sahil, though that particular question will be fully addressed, okay, when you will understand inflation and monetary policy. So during one of the major role is that of the Reserve Bank of India, okay, and for that matter, central bank of any country, okay. So what happens is that they control the monetary policy. They put up different policy segment as and when the and with the instrument like repo rate, with the instrument like bank rate, those sort of, these are technical terms, okay? Technical terms, fine. So they use those sort of policies to minimize the demand, okay? They somehow minimize the demand because what have you seen that or boom is a phase when demand is very, very high. So what government do? Government through monetary policy or RBI through monetary policy, through instruments like repo rate, okay, they bring the demand down temporarily. So they stop the heating up of the economy. This is what China has been doing for quite a long time. India is also doing, okay, but there are many other problems. Those sort of problems you will understand as we progress. अभी तक 3 ही क्लास हुआ है, अभी तो 30, 35, 40 क्लास होने को है, फाइन. तो आप समझेंगे सब चीज. In capitalist country, who looks after the poor? Well, nowadays there is social security scheme, okay, like pension fund, like basic minimum income, okay. So government क्या करता है, उनको पैसा, बेरोजगारी भत्ता, unemployment incentive, जिसको हिंदी में कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, उस तरह का चीज दिया जाता है. If you go to Banaras, you will find many people, Banaras or Rishikesh, those sort of places, you will find many people from European country, American country, they are there. They are like hippies. So from where they are getting money? Every month, certain money is credited to their account. अगर वो 40,000 रुपए भी इंडियन करेंसी में होता है, you can well imagine that it is more than enough for them to feed themselves, maintain themselves in India. Okay? So poor को गवर्नमेंट देखती है, उस तरह से देखती है. Fine? Yes, Anish, certainly helicopter money will have those sort of implications, okay? But since helicopter money is not just ordinary instrument, it is an extraordinary instrument which is employed particularly when the situation is very grim, when the situation is very bad, बहुत situation खराब होता है, तभी हम use करते हैं ताकि demand बढ़े. So the impact on other things like price rise that you are mentioning, वो नहीं दिखता है आमतौर पे, okay? Through tax, Rohit, your answer to your question is tax. Incentive private sector. Incentivizing private sector means जो private sector है, कंपनी हो किसी भी तरह, छोटा बड़ा कैसा भी कंपनी हो, ओके, उसको बेनिफिट दे देता है, टैक्स बेनिफिट. Okay, rupees, and if I'm supposed to pay 30% tax means 100 rupees earn कर रहे हैं, 30% tax मतलब 7, okay. So if
government say that okay, I will not charge you 30%, I will charge you 20%. तो 10 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं? That is incentive. Okay? Providing subsidy in long term is good for an economy or bad. In long term, it is not. Okay? Double depreciation. Amit, this double depreciation you will. ऐसा होता है. Recession आ गया. Recession आ गया मतलब डाउन. One moment. Let me fix it. Recession means down. This you know. Then there is some growth. And again it is down. So the dip is what? Dip number 1 is this. Dip number 2 is this. And then from here, the recovery phase will start. This is not a very nice condition. Double depreciation is never a good thing for any country. Got it? Government can build factories. Government has power to print money, Aman. Okay? Government can build infrastructure. Government can raise fund. वो bill, bonds, securities निकाल के पैसा ले सकता है. Okay? बहुत तरीका है government को. बहुत powerful agency है ना? Sir, government need to look on growth or social development. Which parameter matters more? Both. Today we will talk about growth and development. There you will see that. Fine, Manas. Due to unemployment of large number of people, unfortunately, at the same time leads to crisis in America. Yes, of course. Huge unemployment in any country. Huge unemployment in any country is not a very nice sign. Got it? Okay. Deflationary. There is no okay. Akshankit, that is deflationary. जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो मान लो बढ़ रहा है, अगर ऊपर ट्रेंड हुआ तो हम लोग इन्फ्लेशनरी ट्रेंड. इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी नीचे चला जाता है, घटने लगता है, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन कहते हैं इसको. फाइन. व्हाट इज एमएसएमई? एमएसएमई मतलब MSME, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. फाइन. छोटे छोटे कंपनी जो होती है उनका. वेल अनिश, देयर इज नो लिमिट to how much government can print. Government can print as much as they like, but they don't print a lots of money because it will have impact on the economy. Economy बहुत खराब हो जाएगा बहुत पैसा अगर प्रिंट करेंगे तो. लेकिन गवर्नमेंट को पावर है, कुछ भी प्रिंट कर सकता है वो. So much printing of money means there will be huge inflation in the market. The economy of India will become fragile. That's why government doesn't print a lot. No, Maharat company are not MSME. Maharat company are extremely big company. The profit of Maharat company is more than 5,000 crore. The maximum limit, the medium enterprise, जो maximum होता है वो 500 करोड़ का होता है. वो profit नहीं, valuation is what I'm talking about, okay? Of course, America has many sections of the people who are poor. Are not as poor as India, but no, that, Pratichi, money coming from outside is not at all is helicopter money. Money coming from outside is either loan or grant. Helicopter money नहीं होता. Helicopter money government खुद करती है. Also give some insight to demand supply curve and equilibrium condition. We will talk about such things in Manas in your inflation chapter. Okay? Akshankit, well, you can do that. Printing more money. I told you, printing more money is not a very nice thing to do. It hampers economy. Okay? That's why government print money in a very controlled manner. Otherwise, government has all the power in the world to print as much as they want. But they don't do it because it's not a nice thing to do. Okay? We will talk about this, Deepak, when we talk about banking. Okay? I know, I understand. You guys are excited. Concept in economy that you want to be addressed, but everything will be addressed as we progress further. Printing money, who prints money, etc., etc., all these things.
This will be covered in banking sectors. आगे है, कोर्स में है, पढ़ेंगे हम लोग. Divya, this printing lots of money, how it will impact, this is something we will talk about it in banking sector. अभी ये बताएंगे तो बताने के लिए तो बहुत चीज है, लेकिन अभी नहीं, सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो दिमाग में रहेगा. फाइन. No, Sankit, it is not good because it will create inflationary trend. You don't even understand what is inflation because I have not taught you inflation. When I will teach you inflation, then you will understand the correlation. Inflation पढ़ेंगे, फिर national income पढ़ेंगे, फिर banking sector पढ़ेंगे, तो आप correlate कर पाओगे ना? Yes, Manas, that's right. Printing, RBI prints the note and it depends on gold trench. You're right. Okay? Sir, if employment can increase the growth cycle, then why in our country there is much improvement? Because India in economy is not performing very well. If Indian economy, if Indian industries will perform, there won't be any unemployment. Just because these sectors are not performing, that's why unemployment rate is very high. Lehman Brothers was an ordinary bank. That was an investment bank. They never took money from any person like me. You cannot open a bank account. वहां पे बैंक अकाउंट कौन ओपन करता था? वहां पे बैंक अकाउंट बैंक्स ओपन करते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन करता था, गवर्नमेंट ओपन करती थी, इंडिविजुअल ओपन नहीं करता था. दे यूज टू मैनेज बैंक्स फंड, दैट इज बैंक ऑफ बैंक्स. ओके, वैसा टाइप का था वो, पर्सन से संबंध नहीं था उसको. Negative growth in 2 consecutive quarters means that let's say January, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, January to March, then April to June. ओके, क्वार्टर 1 ये हो गया, क्वार्टर 2 ये हो गया. फाइन. इसमें भी आपने नेगेटिव ग्रोथ किया, इसमें भी आपने नेगेटिव ग्रोथ किया. गॉट इट? अब ये नेगेटिव ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होता है? अगर ये 2021 है, 20 से कैलकुलेट होगा. इसके कंपैरिजन में इसको देखा जाता है. गॉट इट? Why Indian economy not performing very well? We will talk about that in GDP. Why Indian GDP is very low? We will talk about this in national income. Okay? Sir, where you look India in the next 10 years in terms of export and part of global value chain? Well, the prospect seems very interesting. Okay? Abhi Atmanirbhar Bharat, Make in India, many people are coming out from China. So this is a golden opportunity for India, and it can definitely help India in export. Within 20 years, India will become 3rd largest or maybe 2nd largest economy in the world. Got it? All right. So, yes, Shubham, definitely it will create, any infrastructure will create employment. There is absolutely no doubt. And Central Vista in that sense definitely will create employment, but that money could have been utilized for other purpose. हो सकता है. ठीक है? चलिए. Let's begin with our lecture today. Fine. So today we will talk about growth and development. What is the concept of growth and what is the concept of development? Fine. Growth का concept क्या है? और development concept क्या है? See, this idea of growth and development both look very synonymous to each other. दोनों को सुनने में एक जैसा ही लगता है. Okay? So, but if you try and analyze it in a deeper way, then you will find that growth is more of a quantitative change. ठीक है? And our development is more of a
qualitative change. Fine. Growth is more of a quantitative change and development qualitative change. मतलब क्वालिटी है, इसमें क्या है? क्वांटिटी है. गॉट इट? क्वालिटी क्वांटिटी का मीनिंग आपको समझ में आता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है यहां पे. फाइन. तो आगे देखते हैं. दैट both the word we use it interchangeably in our general spoken English. In general sense, it is used interchangeably. Growth की जगह development, development की जगह growth हम बात कर देते हैं. But there is a fundamental difference between growth and development. What is the fundamental difference? One is about quantity, how much. One is about quality. So here, when Narendra Modi said that $5 trillion economy, okay? When he said $5 trillion economy, he was talking about growth. Sorry. Says poverty. It means zero poverty जब बोला, इसका मतलब वो क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, आगे बताते हैं. Now, India is approximately, this is approximately, okay, 2.9 के आसपास है. $3 trillion economy, just imagine, okay? And growth rate of India is presently very less, लेकिन 7% आसपास में इंडिया ग्रो कर ही रहा था. But 21 crore Indians are poor. 21 करोड़ इंडियन जो है वो क्या है? आपका गरीब है. India is your number one is US, then China, Japan, Germany, England and क्या नाम है इसका? फ्रांस, देन इंडिया. अभी 2020 में इंडिया का रैंकिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th रैंकिंग. जीडीपी में इंडिया इज द 7th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. लेकिन 2020 के इनिशियली में, कोविड से पहले, इंडिया का रैंकिंग यहां पहुंच गया था. 5th लार्जेस्ट था, अभी फिर नीचे चला गया. ओके, मे बी इन नेक्स्ट 1 or 2 ईयर 5th लार्जेस्ट फिर बन जाएंगे. इंडिया is the 7th biggest economy in the world. Just a few months last year, India was 5th largest economy in the world. Okay? But India is home of the biggest congregation of poor. में पुअर को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी मैं बता देता हूं. पॉवर्टी में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ समरी यहां देता हूं. दैट इन रूरल एरिया, इफ यू आर अर्निंग 27 rupees per day, and in urban area, if you are earning, so you are not poor. If you are earning this much in rural area, 27 rupees, then you are not a poor. If you are earning 34 रुपए, poor. Imagine, अगर मैं आपको दे दूं 34 rupees, and I ask you to live in cities like Delhi. आपको खाना खाना है, रहना है, क्लोथिंग करना है, एवरीथिंग इंक्लूडेड. हर कुछ इंक्लूड करो, मैं आपको 35 रुपए देता हूं एवरी डे. कैन यू लिव? आंसर इज नो. हाँ, सम एक्साइटेड पीपल कैन से दैट सर हाँ रह लेंगे. पीपल डेफिनेटली कैन से दैट हाँ भाई हम रह लेंगे. यस, एक दिन रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, 3 दिन रह सकते हो, बट कैन यू लिव फॉर 6 months? Perhaps you will die. Because this is unaffordable. 35 रुपए आपको एकदम अफोर्डेबिलिटी से बाहर है, नहीं रह सकते आप. नॉट पॉसिबल. इतना टेल्टेबल, इतना अपॉलिंग फिगर है ये. तब भी 21 करोड़ लोग सोचो इंडिया में, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इवन 27 rupees and 34 rupees a day. This is the government of India's definition, not my definition or any economist definition है ये. तो क्या किस टाइप का डेवलपमेंट है? ग्रोथ में तो चलो इंडिया 7th नंबर है, वर्ल्ड का 7th नंबर, कुछ दिन पहले 5th नंबर था, फिर नेक्स्ट ईयर हो सकता है हो जाए. लेकिन रियली में डेवलपमेंट है क्या?
आप कोरिलेट कर सकते हो, यू कैन कोरिलेट, नॉट एट ऑल. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ development is very, very different. Okay, one should not mix and match, try to mix and match the concept of growth and development. एक चीज तो अपना क्लियर हो गया. अब quantitative, it is qualitative. अब till 1960s, both the concept of growth and development दोनों को सेम ही माना जाता था. Today we are differentiating it. Today we are differentiating it. But the concept of growth and development in economics was considered more or less same. पर अपने पर्पस के लिए यूज करते थे 60s तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, 60 के बाद लगा कि ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है. फ्रॉम देयर दिस जर्नी स्टार्टेड. फ्रॉम देयर दिस जर्नी स्टार्टेड कि डेवलपमेंट को अलग अलग तरह से डिफाइन करो. डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट व्हाट जीडीपी सेज. जीडीपी को खोजने वाला जो व्यक्ति, जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट लाया था, उसका नाम था कुजनेट. ओके, कुजनेट पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे. ही इवन सेड that GDP calculate everything but doesn't calculate anything essential. खुद जो GDP का इजाद किया, the person who invented this technique of GDP, he himself says that GDP हर एक GDP calculate everything but nothing essential. हर कुछ GDP कैलकुलेट करता है. GDP सुन के आप बहुत कुछ समझ सकते हो, लेकिन जो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है, उस चीज को GDP कैलकुलेट नहीं करता है. खुद GDP का जो फादर है वो खुद यही कह रहा है. इसका मतलब जीडीपी ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू जीडीपी, नथिंग मोर. कुछ नहीं पता चलेगा. इंडिया इज 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी, प्राइमा फेसी 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट होम टू द बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन, बिगेस्ट एग्रीगेट ऑफ पुअर पीपल. और पुअर पीपल का डेफिनेशन तो आपने देखा ही, कितना बढ़िया डेफिनेशन है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है कि नहीं. तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अंतर है. ओके, नाउ हेडिंग दीजिए, पुट अप ए हेडिंग ग्रोथ. ग्रोथ हेडिंग दीजिए, थोड़ा लिखिए, फिर आगे हम समझेंगे डेवलपमेंट को और बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में बहुत बार पूछा है, मेंस में पर्टिकुलरली, पीटी में भी पूछा है. राइट डाउन. That growth is a quantitative increase in growth is quantitative increase in economic output of a country. Quantitative increase in economic output of a country. For example, GDP. For example, GDP, comma, per capita income, etc. GDP, per capita income, etc. Full stop. Historically, rapid economic growth was accompanied by industrialization, which transformed
the feudal and agrarian feudal and agrarian society feudal and agrarian society into industrial society. Industrial society. Industrial society. Full stop. Such phenomena was experienced in Western countries. Country. पैरा चेंज कर लीजिए. Till 1960s, both the term growth and development was used interchangeably interchange करते हैं तो interchangeably. But later it was realized the concept of growth is unidimensional. Concept of growth is unidimensional. Growth is unidimensional. And it is very narrow, and the most simplistic. It is very narrow and the most simplistic indication of development. ओके, चलिए तो अब थोड़ा डेवलपमेंट में जाते हैं. डेवलपमेंट. ओके, डेवलपमेंट क्या कहानी है वो पढ़ते हैं. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज अंडरगोन अ सी चेंज. बहुत ज्यादा अंतर आया. ठीक है, अब क्या क्या है वो देखते हैं.
ठीक है, तो वन मोमेंट, थोड़ा नीचे कर दे, अच्छा से दिखेगा आपको, फाइन। सो द आइडिया ऑफ ग्रोथ, ओके, आइडिया ऑफ ग्रोथ इस तरह से प्रोग्रेस किया है। 1960s तक हमने क्या बोला, दैट बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द आईज ऑफ पॉलिसी मेकर वॉज मोर और लेस सेम। पॉलिसी मेकर मतलब आप जो सर्विस को एस्पायर कर रहे हैं, यू आर द वन हु इज गोइंग टू मेक पॉलिसीज, वहां पे आप सेक्रेटरी रहेंगे, जब एडवाइजर रहेंगे आप तब, ओके। सो इन द आईज ऑफ पॉलिसी मेकर द आइडिया ऑफ ग्रोथ, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, इसमें कोई अंतर नहीं था ज्यादा 1960s तक। आफ्टर 1960s when it was realized that no, growth is a very simplistic, very narrow concept, development is altogether a different thing, okay, then the first thinking towards development came to be called as your traditional approach. Uske baad aur then again investigation was done, again thinking was put to good use, and then they say कि भाई multi dimensional approach adopt करो आप। देन उसके बाद और एक नया अप्रोच आया 1990s में, ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच। और अभी के टाइम में सबसे जो इंपॉर्टेंट अप्रोच है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। सो वेर एवर एनी आर्टिकल यू रीड, एनी जर्नल यू रीड, कुछ भी पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, तो ये वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम यहां से लेकर यहां तक पूरा पढ़ेंगे वन बाय वन, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरियस अप्रोचेस दैट आर अवेलेबल एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न, ओके। सूरज ने पूछा है सर नोट्स अपलोड नहीं हुआ है, हो जाएगा नोट्स अपलोड। yesterday I spoke to the people in management, they said that notes will be uploaded in a couple of days, means कल बोला था 2 दिन, तो आज नहीं तो कल आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बट सी the notes that will be more like printed notes, okay, but the major notes that you should be relying on is class notes. Whatever I dictate you and whatever I write on the board, all those things has to be there in your notebook. That will suffice. ये आप याद रखिएगा, काम हो जाएगा उसी से। अगर आप उसी को 4-5 बार पढ़ लिए तो फिर दिक्कत नहीं होगी ना पीटी के क्वेश्चन में ना मेंस के क्वेश्चन में। चलिए, तो पहले आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच।